Hello everyone, this is Sumit and welcome to Petrogate PYQ series. And in this series or in this course, in this session or in this small lecture, we will discuss all the questions that has been asked in GATE 2016 and from the production engineering. Okay, so from the production engineering जो भी question हमारे 2016 में आए हैं GATE के अंदर, that we are going to discuss here. Okay, no problem. So now you will see the question number 1, my dear. Okay, this is your question number 1. So in this is the question related to your subsurface safety wall. And subsurface safety wall is nothing but it's a arrangement or it's a wall that is used in your subsurface or in your wellbore. Okay, जिससे कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा आ जाता है, या बहुत हाई रेट से आता है, या बहुत हाई प्रेशर से आता है. Sometimes what happen, your production rate or production pressure may be higher, okay, that you don't want. So उससे ऊपर जाते ही एक हमारी वॉल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, वो मेरा सबसरफेस कंट्रोल सबसरफेस सेफ्टी वॉल हो जाएगी. दैट वॉल कॉल्ड है सबसरफेस सेफ्टी वॉल. ओके, सो दैट वी विल यू कैन से सेव योर टूल्स इक्विपमेंट वट एवर यू हैव इंस्टॉल इन योर वेल कंप्लीशन. ओके, जिससे आपका वेल बंद हो जाए और देन यू कैन कंट्रोल योर प्रेशर एंड ऑल. ओके, सो वी इंस्टॉल योर सबसरफेस सेफ्टी वॉल. ओके, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द सबसरफेस सेफ्टी वॉल एंड वेरी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन. ओनली द वन सिंगल formula we will use here and you will get the answer, no problem. Okay, but before telling this particular question, I will tell you the concept of subsurface safety wall actually. Okay, now you will see this particular subsurface safety wall. Okay, क्या होता है I am telling you these subsurface safety wall, listen me carefully. Subsurface safety wall are two type, my dear. The two type, my dear. First subsurface safety wall can be surface control subsurface safety wall, or maybe another is subsurface control subsurface safety wall. Okay, means एक subsurface safety wall can be controlled by surface and one subsurface safety wall can be controlled by subsurface control. Okay, so there is a two type wall. Okay, no problem. And this is the question which is based on this. Okay, means you are controlling your subsurface safety wall from the surface control. No problem, sir. Okay, no problem. Sir, how we can control my wall? No problem. Actually, a hydraulic line you are going. Okay, you will see the hydraulic line, and this hydraulic line, suppose you are installing your subsurface safety wall at this particular depth, or this is your tubing, and your production will is coming from this through this particular tubing. No problem. Okay, so what you will do, you are having another wall or hydraulic line. In this particular hydraulic line you are injecting your fluid with a high pressure, or you can say applied pressure. Okay, and this wall and this applied or higher pressure, okay, so this applied pressure or this hydrostatic pressure of the fluid will exerting a pressure at this particular point, and your this arrangement will be shifted little bit downwards and your wall will be open. I'm telling you, suppose this is your closed wall, and this hydraulic line you are injecting some fluid, and this hydrostatic pressure and applied pressure, combination of these pressure value is responsible to the open the wall. Okay, no problem. So now you will see this arrangement will be shifting downwards. This arrangement will be shifting downwards so that this wall will be try to open. Okay, now you will see this arrangement, this point will be now this point. Okay, shifting downwards, and this point will be now downwards. Okay, now this wall will open. Okay, and now you will see this fluid is try to close this particular what happened, this fluid is coming, this fluid acting a pressure on this particular point, and this fluid pressure try to uplifting this arrangement to upward side so that your wall can be closed. So overall is that there is some factor and forces which are responsible to close the wall, there is some factor and forces which are responsible to open the wall. Okay, so I want to calculate what. Okay, in this particular question you can see, हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, you can see now what I will see, a hydraulic line of subsurface safety wall, okay, has a fluid of specific gravity. Okay, a fluid which you are having in this particular hydraulic line, that specific gravity is 1.2. okay, no problem. And to operate the wall, okay, we are operating this particular wall through this particular specific fluid, and specific gravity is given. The wall closing pressure, okay, closing pressure is given, I know, no problem. And the recommending safety factor also
हमेशा किसी भी वॉल को मैं ओपन करने जाऊं या क्लोज करने जाऊं तो मेरे पास एक सेफ्टी फैक्टर होता है, ठीक है, सो दैट कि मैं उसको कंसिडर करके अपनी चीजें को स्मूथ कर सकूं। द मैक्सिमम डेप्थ एट विच द वॉल कैन बी पोजिशन। ओके, सो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर हैविंग ए वेरी स्मॉल और सिंपल फॉर्मूला। ओके, उससे भी आप लोग कर सकते हो और मैक्सिमम टाइम बच्चे उसी से कर लेते हैं। लेकिन मैंने इसका फील, एक क्वेश्चन का फील, इसको कैसे हो रहा है, सेफ्टी फैक्टर, व्हाई यू आर एडिंग द सेफ्टी फैक्टर, व्हाई यू आर नॉट सब्सट्रैक्टिंग द सेफ्टी फैक्टर, ये कैसे हो रहा है वो मैंने फील लेक्चर सीरीज में करा रखा है। लेकिन मैंने बोला हुआ है कि आप फॉर्मूला भी याद रख लेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, सो you can see this particular formula. Okay, formula is what? Like what is your closing pressure? Okay, what is your opening pressure? What is your safety factor? No problem. Okay, so this is the formula that you can solve this particular question. Okay, I'm solving this particular question. So he is giving the closing pressure. Okay, no problem. Closing pressure is given 1200 psi. Okay, no problem. Next is what? Opening pressure is not given, but I want to calculate height. Okay, opening pressure. Well, safety margin is given or not? Yes, that is your given 200 psia. 200 psia, no problem. So you can solve it. This will be your 1000 psia equal to opening pressure. Just tell me, opening pressure is responsible only, I'm telling you, opening pressure is responsible, I'm telling you, opening pressure 1000, this is psia. Opening pressure can be categorized in two type or can be responsible of two factor. First one is what is your hydrostatic pressure plus what is your applied pressure or surface pressure, you can say. Okay, how, you just tell me if you want to give the pressure in this particular location. So I will give the pressure of hydrostatic through this particular hydraulic line so that this arrangement will be shifted to downwards. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि this is your wall and I want to open this particular wall, so I will see कि what is the hydrostatic pressure which is applied or acting at this particular point, that will be responsible of P hydrostatic pressure is what, plus you are giving some pressure or not. If you are giving, so you can see pressure of surface pressure, or you can also see this is also, you can say, applied pressure. Okay, so these are the two factors which is responsible to open the hole. Okay, no problem. So I am categorizing these applied pressure can be your opening pressure can be the combination of your hydrostatic plus applied pressure, or can be if you are not applying any pressure, that is you are not giving any surface pressure, so you can neglect it, no problem. So in this particular question, is your the value of surface pressure or applied pressure is given or not? No. So it means you are not apply any particular pressure. So it means for this particular question you can neglect it and this can be a 0. So now what you will see what you will see. So it means there will be only the hydrostatic pressure. Okay, so now you know very well, this is your psia, and now you heard of hydrostatic pressure formula, you know very well, 0.433 density or specific gravity in gram per cc. Either you can say gram per cc, either you can take specific gravity. I told you many times specific gravity or the density of fluid in gram per cc both are equal. ओके, मैंने बोला हुआ है कि ग्राम पर सीसी में डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा बराबर होती है, मल्टीप्लाई डेप्थ. ओके, नो प्रॉब्लम. सो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी यू आर हैविंग और नॉट? यस, आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू 1.2. ओके, 1.2. तो नाउ आई एम पुटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू 1.2 एंड दिस योर कन्वर्जन फैक्टर. एंड मैनी टाइम आई टोल्ड यू कि इफ द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड इज गिवन इन ppg, तो you will write 0.052. otherwise if the density you are keeping in your gram per cc or your specific gravity, definitely you will use 0.433. so now you can do the calculation and your answer you will get your answer. 1000 divided by 0.433 divided by 1.2, so it means depth whatever you are having, that is 1924.5 feet. Okay, and the depth will be in your feet, no problem. So now this is your right answer. And ये formula आप कैसे याद रख सकते हैं? How you can remember this particular formula? That I also am telling you. This is your C, this is your O, this is your M. Okay, and you can say this is equal to and plus. Okay, so you can say COM means शिवम. शिवम बहुत स्टूडेंट्स के मेरे नाम है, ठीक है. शिवम आप देखोगे बहुत लोगों बच्चों के नाम दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं. मैं हर बार बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप शिवम से इसको याद रख लीजिए, ठीक है.
और इन दोनों के बीच प्लस रखिएगा, ठीक है। तो इससे आप हमेशा याद रखिए COM, COM, C क्लोजिंग, ओपनिंग एंड सेफ्टी मार्जिन, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज योर राइट आंसर माय डियर। एंड अब आप ये बोलोगे सर ये ऐड क्यों हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है, इसके बारे में एक बढ़िया सी कहानी है, वो लेक्चर सीरीज में हालांकि डिस्कस कर रखी है मैंने। सो आई हैव डिस्कस दैट स्टोरी इन आवर लेक्चर सीरीज। तो वो एक बहुत मजेदार कहानी है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, मैं एवरी टाइम आई टेल यू आई टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स कि ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो नाउ यू विल सी द आंसर, राइट आंसर विच इज द गेट रेंज, यू विल सी ओके दैट माय आंसर इज इन मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, नो प्रॉब्लम। सो नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन ओवर, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, ओके। यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दैट यू विल सी ए sucker rod pumping unit designated by this, okay। एक्चुअली क्या होता है कि each and every sucker rod unit and sucker rod equipment you will see, artificial lift you can see, so उनकी एक डेजिग्नेशन होती है या उनकी एक लाइंस होती है जो रिप्रेजेंट करती है उनकी पावर्स को, वो किस टाइप की आपकी वेसल आपका आर्टिफिशियल लिफ्ट है, या वो कितना लोड सहन कर सकती है, या उसकी स्ट्रोक लेंथ क्या है। तो उसके बारे में एक जनरल और इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देती है, ठीक है। हर एक आर्टिफिशियल लिफ्ट की, अगर मैंने बोला कि यार ये एक आर्टिफिशियल लिफ्ट लेके आ जाऊं क्या, हम उसने कहा उसकी डेजिग्नेशन भेजो, मतलब उसकी चीजें मेन इंपॉर्टेंट चीजें भेजो। जैसे आप फोन खरीदने जाते हो, यार ये फोन ले लूं क्या, हाँ ले लो, कितनी रैम है, कितनी मेमोरी है और कितना कैमरा है उसका, कितनी स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ डेजिग्नेशन और स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस और इक्विपमेंट, ओके। तो यहाँ पे भी सेम है, दीज आर द सेम थिंग्स विच आर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ सकर रोड पंप। तो दीज डेटा इज टेलिंग अस अबाउट द डेजिग्नेशन और योर स्पेसिफिकेशन ऑफ योर सकर रोड यूनिट, ओके। सो अब आप इसका हर एक यूनिट का हर एक वैल्यू का कोई मतलब होगा, ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। सो हम लोग, तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन इज वेरी simple, sucker rod pumping unit designated by this, hence D represent what, D sucker rod length or like diameter of plunger, diameter of sucker rod, double reducing gearbox, number of things option, okay। तो मुझे नहीं पता अभी ऑप्शन क्या है, तो मैं क्या देख लेता हूँ, मैं पूरी डेजिग्नेशन पढ़ लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं देख लेता हूँ डेजिग्नेशन क्या है। तो दिस इज द डेजिग्नेशन माय डियर ऑफ sucker rod unit। so I am telling you each and every terms whatever you are having in this particular designation। so हर एक टर्म्स का मतलब we are going to discuss first, okay। तो जो पहला वर्ड है that is the first word which is representing which type of unit or artificial or sucker rod unit you are having, okay। so if you are having in this particular code is C, so it means your conventional vessel you are having, okay। and if you are having B, so maybe a beam balance, if you are there is a written is A, it means there is a air balance, if M, so there is a mark second, okay। so these are the four or five टाइप कि ये किस तरीके की यूनिट है, पंपिंग टाइप ऑफ पंपिंग यूनिट है, किस तरीके की आर्टिफिशियल लिफ्ट है, किस तरीके की सकर रोड पंपिंग यूनिट है। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय दिस पर्टिकुलर इनिशियल वर्ड, ओके। सी है तो कन्वेंशनल, ए है तो एयर बैलेंस, बी है तो बीम बैलेंस, एम है तो मार्क सेकंड, ओके। तो हम लोगों को ये याद रख लेना है, ठीक है। और ये दीज आर द थिंग्स ना, दीज आर द टाइप ऑफ पंपिंग यूनिट इज डिफरेंट, ओके। तो यू कैन सी सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एयर बैलेंस, दैट इज योर एयर बैलेंस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस योर कन्वेंशनल, दिस इज योर मार्क सेकेंड, ओके। एंड सर व्हाट अबाउट द बीम बैलेंस, बीम बैलेंस सब देखिए मैं बता दे रहा हूं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज अबाउट द कन्वेंशनल एंड बीम बैलेंस। सर मुझे ये तो पता है, ये भी मुझे पता है सर, ये मैंने सुनी है, बट सर ये भी मैंने सुनी है, बट इन दोनों में डिफरेंस तो मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस इज कन्वेंशनल इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ बीम बैलेंस, ओके। बीम बैलेंस इज यूज लाइक इन वेरी ओल्ड एज, और अभी उसमें काफी मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। डिजाइन वही है, डिजाइन यही रहेगा कि पिटमैन आर्म और योर हॉर्स हेड विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड फल्करम विल बी इन बिटवीन ए ऑफ दीज, ओके। सो सेम चीज रहेगा, बट सम मॉडिफिकेशन और डिजाइनिंग पार्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो क्या होगा कि दैट विल कॉल्ड योर कन्वेंशनल। तो बीम बैलेंस इज ए ओल्डर वर्जन ऑफ कन्वेंशनल, और यू कैन से द कन्वेंशनल इज ए मॉडिफाइड और न्यूली वर्जन ऑफ बीम बैलेंस, ओके, नो प्रॉब्लम। सर व्हाट अबाउट द अदर टर्म्स व्हाट यू आर सीइंग, ओके, नो प्रॉब्लम। सर 140 means what? 140 means what? कि this is
representing what okay, this is representing what? Torque. Okay, torque means 140 multiply you are doing 1000, multiply of you are doing 1000. Okay, and whatever the value you are having, that is your 140 and 1230, and unit will be, torque unit will volt, pound inches, pound inches. This is your torque unit. Okay, torque unit. Okay, so हमने बचपन में पढ़ा है torque equal to क्या? FD. ओके, ठीक है, तो यूनिट लाइक फोर्स लाइक ए न्यूटन, और यू कैन से द पाउंड, और दिस विल बी योर फीट और योर इंचेस. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ द थिंग इज दैट सर, दिस इज योर टॉर्क काइंड ऑफ थिंग. मीन्स दिस सकर रोड, दिस डेजिग्नेशन रिप्रेजेंट की हाउ मच वैल्यू ऑफ द टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड बाय दिस डेजिग्नेशन सकर रोड यूनिट. ओके, इस डेजिग्नेशन की सकर रोड यूनिट कितना टॉर्क अप्लाई कर सकती है. यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं हो जाएगी नहीं तो, कि ये इतना टॉर्क ये प्रोड्यूस कर सकती है. सो यू कैन से पीक टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क रेटिंग इन 1000 ऑफ इंच पाउंड. ओके, 1000 ऑफ इंच पाउंड मींस आई मल्टीप्लाई बाय द 1000. नो प्रॉब्लम सर. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म यू विल सी दिस 117. 117 रिप्रेजेंटिंग, दिस रिप्रेजेंटिंग योर टॉर्क, दिस रिप्रेजेंटिंग योर टाइप, दिस रिप्रेजेंटिंग योर लोड. ओके, लोड मींस 117 मल्टीप्लाई बाय 100, so you will see 11700. So this pound load can be uplifted. Okay, this pound load can be handled by this particular sucker rod unit. So polish rod load rating in 100 means multiply by 100. Here 1000 multiply by 1000 of pound. Okay, no problem. Okay, D means double reduction gear reducer. Actually इसका मतलब क्या होता है? I'm telling you कि this is not rotating your itself. This is rotating by the prime mover. This is rotating by the prime mover or motor you can say. Okay, so this motor has the higher RPM and less torque. होता है, ठीक है. दिस मोटर हैज द हायर आरपीएम. ओके, एंड टॉर्क बहुत ज्यादा नहीं होता. सो व्हाट आई विल डू, आई विल, बट अगर मैं इसको हाई रेटिंग से रोटेट करा दूं तो ये तो बहुत तेजी से ऊपर अप एंड डाउन होने लगेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस दिस पर्टिकुलर आरपीएम टू दिस पर्टिकुलर है. ओके, तो मैं यहां से यहां तक एक आरपीएम घटाने का, आरपीएम कम करने का और टॉर्क बढ़ाने का एक डिवाइस लगा देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं डबल रिडक्शन गियर रिड्यूसर. ओके, सो ये मेरा होता है प्राइम मूवर और दिस काउंटर बैलेंस के रोटेट करने के बीच में, क्योंकि ये हाई रेट से रोटेट कर रहा है एट लो टॉर्क एंड दिस इज रोटेटिंग विद ए हाई टॉर्क बट लेस आरपीएम. सो हाउ दिस कैन बी पॉसिबल कि दी आरपीएम यहां पे आते हुए कम हो जा रहे हैं, टॉर्क बढ़ जा रहा है. तो दिस, ये इसकी मेहरबानी है. किसकी मेहरबानी है मेरे भाई? इसकी मेहरबानी है. ओके, सो डी जनरली मैक्सिमम टाइम डी यूज करते हैं हम लोग. हो सकता है ट्रिपल भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, सिंगल भी हो, ठीक है, लेकिन जनरली मैंने जहां तक देखा है वो डी ही देखा. तो डी मींस डबल रिड्यूसर गियर रिड्यूसर. ओके, डबल रिडक्शन गियर रिड्यूसर. ओके, नो प्रॉब्लम. तो लास्ट में देख लेते हैं भाई. एल, दिस इज योर 64 मींस दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर स्ट्रोक लेंथ. ओके, स्ट्रोक लेंथ. ओके, तो कितना ये ऊपर नीचे हो रहा है, कितना मेरा स्ट्रोक लेंथ है, that is representing by this. So this is your stroke length in inches. Stroke length in inches. Okay, तो याद रखने का तरीका is very important. Maximum or you can say number of questions can be formed from this particular chart or this particular data. So this is your type, this is your torque, load, length. Okay, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. Torque, load, length. ये तो पता ही है टाइप. Okay, इसको छोड़ो. Torque, load, length, torque, load, length, torque, load, length. Okay, बट ध्यान ये रखना मेरे भाई, यहाँ मल्टीप्लाई 1000 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 100 होगा, और इसकी यूनिट पाउंड पर इंच होगा, इसकी यूनिट ओनली इंच होगा, सॉरी पाउंड होगा, और इसका इंच होगा. ओके, नो प्रॉब्लम. सो यहां तक बात ठीक है ना? चलिए, ओके, नो प्रॉब्लम. सो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बताता हूं गलती कहां होती है. आई एम टेलिंग यू वेयर द स्टूडेंट्स कैन मिस्टेक. एक्चुअली सपोज दिस द क्वेश्चन इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट अबाउट द पीक टॉर्क कैन बी अप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर यूनिट. तो ऑप्शन इज गिवन व्हाट, ऑप्शन इज गिवन दिस मल्टीप्लाई बाय 1000 मींस 30. ओके, अनदर ऑप्शन इज दैट दिस. ओके, 30. Unit will be pound inch, unit will be pound feet. So students can also take this particular option because there is multiplied by 1000, no problem. Unit pound feet मुझे सही लग रही है, देखने में सही लग रही है, बच्चे ने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे, बट मुझे सुनने में सही लग रहा है कि पाउंड फीट, हाँ यानी कि ये होनी चाहिए, तो इस पे लग रहा है. भाई मेरे भाई पाउंड इंच है, बोल दिया यहाँ पे 1000 ऑफ इंच पाउंड, तो इसलिए ये ध्यान रखना, बस यहाँ पे गलतियां होती है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ लेट्स कम टू माय क्वेश्चन नंबर 2.
सो इसने बोला व्हाट ही इज सेइंग बट डी रिप्रेजेंट व्हाट, डबल रिडक्शन गियर बॉक्स, खत्म, नो प्रॉब्लम. स्ट्रोक लेंथ, नो, स्ट्रोक लेंथ रिप्रेजेंटिंग बाय दिस. डायमीटर ऑफ प्लंजर, नो, नो प्रॉब्लम. डायमीटर ऑफ स्ट्रोक, नो नो नो. ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, हालांकि मैंने टाइम ज्यादा ले लिया इस पे, बट नो प्रॉब्लम. ओके, ऑप्शन नंबर A is correct. Okay. So now we will see the question number 3rd. So the question says that for an effective hydraulic fractured well, the skin factor will generally, skin factor क्या होगा when your well has been hydraulic fractured. Okay, no problem. So I told you, or you can say many times we discuss in this particular topic, or this particular, it's a very important in fact. Okay, and very conceptual. I'm telling you what about the concept in this particular question behind it. Okay, so now you will see this particular diagram. अब एक्चुअली क्या होता है कि सपोज दिस इज योर वेल बोर एंड बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस लाइक ड्रिलिंग, सीमेंटिंग, हाइड्रिलिंग फ्लूइड और योर वर्कओवर ऑपरेशन, योर लाइक नियरेस्ट जोन ऑफ द वेल बोर हैज बीन डैमेज्ड. Damaged means nothing but suppose this is your well like zone and permeability of this zone is 50 and your zone, nearest zone of the well bore permeability has been reduced like that is your 6 or like that is your 20. Okay, so मैं बोल रहा हूं यहां पे कि नियरेस्ट जोन की परमेबिलिटी थोड़ा बहुत रिड्यूस होना एक डैमेज जोन का मतलब होता है. डैमेज मतलब मुझे नहीं चाहिए ये चीज, ये मेरे जोन को डैमेज कर रही है, बिकॉज वो मुझे नहीं चाहिए. क्योंकि जब whenever your fluid is try to come in this particular well bore, so what happen, this damage zone or path, this is not the correct path. अगर मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है तो मेरा रास्ता अगर खराब है तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, या जाऊंगा तो मेरी एनर्जी काफी लॉस हो जाएगी वहां पे. जैसे ही मैं अपने लोकेशन पे पहुंचूंगा तो मुझे काफी ज्यादा डाउन फील करूंगा, यार मैं थक गया हूं, बात समझ रहे हो ना. सो आई विल फील सम टायर्ड. ओके, नो प्रॉब्लम. तो यहां किसकी वजह से वो चीजें हो रही हैं कि फ्लूइड विल कम इन दिस पर्टिकुलर वेल बोर, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रेशर ड्रॉप यू आर हैविंग, यू विल फील कि सर प्रेशर ड्रॉप तो होगा, अगर मैं यहां से कहीं जाऊंगा तो मैं थकूंगा तो जरूरी, लेकिन कितना थक रहा हूं ये मेरे डिपेंड कर जाएगा मेरा रास्ता और मेरा व्हीकल्स कैसा है. ठीक है, अगर मेरा रास्ता बहुत अच्छा होगा तो मैं बहुत दूर भी बिना थके जा सकता हूं, थकूंगा जरूर बट थोड़ा सा. ठीक है, तो सेम चीजें यू आर हैविंग ऑल्सो कि सपोज योर रिजर्वोयर फ्लूइड प्रेशर इज 1000, आई एम टेलिंग यू 1000 psi and your fluid is try to moving into the well bore and your permeability of this particular zone, suppose I am telling you 50 millidarcy, I am taking example, no problem. And when this और इस जोन के पास well bore के just near there is also some damage zone. Damage zone means this distance is damage zone distance, or you can say the डैमेज का मतलब क्या होता है, डैमेज का मतलब से परमेबिलिटी से होता है. डैमेज मतलब परमेबिलिटी कम हो गई है भाई, बहुत कम हो गई है, जो कि 20 है. यानी कि यहाँ का रास्ता इतना अच्छा है, यहाँ का रास्ता थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है. तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ मैं कम थकूंगा, यहाँ से यहाँ मैं ज्यादा थक जाऊंगा. बात समझ रहे हैं. तो थकने का मतलब यहाँ पे फ्लूइड के साथ क्या है, प्रेशर का रिडक्शन. ठीक है, तो नाउ फ्लूइड मेरा चला नहीं है तो वो रिजर्वोयर के प्रेशर पे ही है, कोई थकावट नहीं है. जैसे ये व्हेन इट मूविंग इन टुवर्ड्स द वेल बोर, तो यह क्या होगा कि मेरा डिस्टेंस ट्रैवल होता मेरा फ्लूइड का प्रेशर और एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी. जैसे मेरी हाथ होता है जब मैं कहीं दूर जाता हूं तो थकता चला जाता हूं. बात समझ रहे हैं. तो मेरा जो है रास्ता जो है 50 मिलीडार्सी है, तो जो थकने का ट्रेंड होगा वट एवर द प्रेशर रिडक्शन ट्रेंड दैट विल बी सेम बिकॉज यहां से यहां तक रास्ता एक ही जैसा मिला है, एक ही जैसा व्हीकल है मेरे पास. बात समझ रहे हैं. अब जैसे ही मैं यहां पे एंटर करता हूं तो मेरा जो पाथ है, परमेबिलिटी है, रास्ता है, वो बहुत उबड़ खुबड़ मिल रहा है. मीन्स वट एवर द पाथ यू आर हैविंग इन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज नॉट वेरी स्मूथ. वो क्या है ना, बहुत बेकार रास्ता है, परमेबिलिटी रिड्यूस है. तो इट मीन्स in first it means your energy or your pressure reduction will be extra in this particular zone. So initially अगर ना ये जोन ना होता तो आपका ये permeability 50, ये permeability 50, तो आपका जो थकने का ट्रेंड है वो यही फॉलो करता. ठीक है, यही फॉलो करता. बट यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर ड्रॉप मुझे देखने को मिलेगा, मुझे एक्स्ट्रा थकावट देखने को मिलेगी इस हल्के से जोन में, जो कि मेरे बेकार रास्ते की वजह से हुआ है, जो कि मेरी बेकार परमेबिलिटी की वजह से
हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरा जो मेरा थकने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा बढ़ गया है, पहले से बढ़ गया है, तो मुझे यहाँ पे एक प्रेशर ये ट्रेंड मिलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो सपोज मेरा ये प्रेशर 1000 था, तो मेरा फ्लूइड, लिसन, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आई एम टेलिंग यू वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जब ये व्हेनेवर योर फ्लूइड इज कमिंग फ्रॉम द रिजर्वोयर टू वेलबोर, तो योर फ्लूइड विल एंटर एट व्हाट प्रेशर, दैट इज योर PWF। ध्यान रखना, that is your PWF. So now you will see, suppose your PWF will be your 500 psi when your trains is not disturbed because of any permeability reduction or any damageness. मतलब अगर आपका कोई भी जोन में डिस्टर्बेंस ना होता, सेम परमेबिलिटी होती 50-50-50, तो मुझे जो प्रेशर मिलता इस वेलबोर में तो वो 500 मिल जाता और वो चला था मेरा इतना 1000 प्रेशर पे। बट मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर ड्रॉप मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस्ड परमेबिलिटी। सो मुझे यहाँ पे बहुत कम प्रेशर, मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगा, मतलब मेरे अंदर एनर्जी इससे कम होगी इस बार, जो कि लगभग मान ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग एग्जांपल 200 psi। सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है यार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्या होगा, अब बात समझना, दिस रिड्यूस्ड, अब बात समझना, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ की परमेबिलिटी आप 20 बोल रहे हो, इफ यू आर सेइंग कि दिस परमेबिलिटी जोन इज 20 विच इज लेसर देन दिस, सो मे बी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि दिस परमेबिलिटी जोन, दिस जोन परमेबिलिटी इज हायर एज कंपेयर टू दिस, ओके, नो प्रॉब्लम, मींस मे बी दैट विल बी 70। तो इसका मतलब ये है कि जितनी रेट से थकावट मुझे इस जोन में हुई थी, यहाँ उतनी भी नहीं होने वाली है, यहाँ बहुत कम होने वाली है। तो इट means your pressure reduction will be lesser at this time as compared to this also or this also. So now your pressure trend will also, but थकेगा तो जरूर भाई, ठीक है। So now your pressure will be 800 psi, means at this pressure range your fluid enter in this particular valve or in this situation this enter into the valve is 200 psi. Okay, so this extra pressure drop, my dear, this extra pressure drop, if I'm subtracting this pressure to this pressure, that will be your difference is what? That will be your delta P. That will be your delta P is what? Your 300. Okay, if you are subtracting this minus this, so that will be your delta P equal to minus 300, my dear. Okay, so now you will see if the pressure difference is negative because of skin. अब सर स्किन तो मेरी समझ में नहीं आया मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही स्किन पे है, तो मुझे जो ये कहानी बतानी थी ना, अब ये स्किन पे ही जाने वाली है और ये जानी भी चाहिए बिकॉज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्किन। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द स्किन। ओके, सो व्हेनेवर योर परमेबिलिटी इज रिड्यूसिंग, सो इट मीन्स you inserted a skin here. Inserted skin मतलब inserted mean adding your plus, ऐसे याद रख सकते हैं। So permeability is less, so it means skin will be your positive. Skin will be your positive and pressure difference because of this skin is your also positive, is your also positive. Okay, no problem. And if your like permeability is higher as compared to normal condition, this is the normal trend na. So if your permeability is lesser as compared to this normal trend, so it means you are positive. How it can be possible? You are inserting something, you are adding something, you are damage something, you are add means positive skin. Okay, now you are removing some material so that the path or very smooth path will create. So you are removing, you are like removing some skin. So it means you can say removing means negative. तो ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा रिमूव कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो इट मीन्स ये मेरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए, सो नाउ इफ योर स्किन इज नेगेटिव, तो प्रेशर डिफरेंस बिकॉज ऑफ स्किन ऑल्सो नेगेटिव, प्रेशर डिफरेंस बिकॉज ऑफ स्किन ऑल्सो पॉजिटिव है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक कहानी एक स्किन के ऊपर तैयार हो गई है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यू आर डूइंग, मींस हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मींस यू आर क्रिएटिंग सम फ्रैक्चर्स, मींस यू आर गिविंग सम पाथ, यू आर रिमूविंग सम मटेरियल, यू आर इंप्रूविंग सम परमेबिलिटी और पाथ। तो इट मींस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में बी देयर, मींस योर स्किन में बी नेगेटिव, प्रेशर डिफरेंस बिकॉज ऑफ स्किन ऑल्सो नेगेटिव। तो क्वेश्चन इज दैट ही इज आस्किंग ओनली द स्किन फैक्टर मींस नेगेटिव। तो ये
ये हालांकि चीजें सभी को पता थी, बट स्टिल एक कहानी के तौर पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दी है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, मींस इफ हाइड्रोलिक फ्रैक्चर्ड वेल यू आर टॉकिंग अबाउट, द नेगेटिव स्किन यू विल हैव। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैं कुछ फील कराना चाहूंगा आप लोगों को। आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक यू फील समथिंग, और जो काफी बच्चों को शायद हो सकता है ना पता हो, ठीक है, हो सकता है काफी बच्चों को पता भी हो। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप ESP is installed at the depth of this. Okay, no problem, sir, this particular depth, okay, I'm telling you, एक particular depth है, suppose you are having this particular depth, okay, so this is your 10,000 depth, okay, no problem sir, no problem, okay, from the surface this is 10,000 feet, an electrical submersible pump we have installed. Electrical submersible pump एक artificial lift है that we are going to install to uplift the hydrocarbon to the surface, okay, no problem. The ESP gives 20 feet water head per stage. Okay, so electrical submersible pump में क्या होता है कि number of stage you are having 1 2 3 4 5. Okay, suppose one stage fluid can uplift only 20 feet, my dear, 20 feet. Okay, 20 feet. So how many number of stage I need to uplift this hydrocarbon from this artificial lift to this surface? Means 1000. Okay, no problem. The wellhead pressure also I need something. Okay, I need wellhead pressure also. सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. Okay, no problem, हम देख लेंगे. तो what will be the minimum number of stage ESP required for this particular well? Okay, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, जो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है. एक टर्म होती है टोटल डायनेमिक हेड, एक टर्म होती है टोटल डायनेमिक हेड. सो व्हाट अबाउट द टोटल डायनेमिक हेड? आई एम टेलिंग यू, टोटल डायनेमिक हेड, लिसन मी केयरफुली, टोटल डायनेमिक हेड इक्वल टू व्हाट विल बी द प्रेशर you are having at discharge. Listen, discharge minus what is the pressure of suction. Suppose this pump gives the pressure means 500 pressure. Okay, तो आप लोग खुश हो गए कि सर 500 प्रेशर मुझे दे रहा है ये पंप. अरे मेरे भाई, कुछ प्रेशर नीचे से अपने आप ही आ रहा होगा जो कि 200 है. तो जो पंप ने प्रेशर दिया है वो सिर्फ मेरा 300 ही है. ठीक है, आप ये खुश मत हो कि मेरा पंप ने 500 प्रेशर दे दिया. नहीं, पंप ने 300 ही प्रेशर दिया है, तो इसका मतलब यही है टोटल डायनामिक हेड. ओके, सो इट मींस द पंप gives only the 300 pressure because the 200 pressure is coming from the back, from the suction point itself. Okay, from the downhole of this particular ESP. So it means if the pump is give the 500 pressure and 200 pressure coming from the back side, so it means pump इनहैंस द प्रेशर ओनली 300. तो मेरा टोटल डायनेमिक हेड सिर्फ वो होता है जो मेरे पंप के द्वारा किया गया है, जो मेरे पंप ने किया है, जो मेरे पंप ने काम किया है. दैट इज ओनली द टोटल डायनेमिक हेड. बहुत लोग इसको बस ये बोल देते हैं कि व्हाट इज अबाउट डिस्चार्ज. ओके, ये भी सही है. जब मेरा सक्शन प्रेशर 0 हो जाए, मींस जब मेरा कोई भी फ्लूइड नीचे से उठ के खुद ना आए पंप पे कि लो सर मैं आ गया खुद ही. ठीक है, वो कुछ हाई प्रेशर पे ना आए, सर मैं पीछे से 20 प्रेशर लेके आया हूं, अब आपको सिर्फ 480 प्रेशर देना है जिससे कि हमारा ऊपर 500 प्रेशर हो जाएगा. ऐसी कहानी अगर नहीं बन रही है, 0 प्रेशर है सक्शन पे, सो देन इट विल बी पॉसिबल. अदरवाइज मुझे यहां पे पी सक्शन लिखना होगा. ओके, अब हम बात करेंगे, सर ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, सो नाउ व्हाट, अब मुझे बताइए, मान लो सक्शन प्रेशर 0 है, मान लो सक्शन प्रेशर 0 है. लिसन मी केयरफुली, सक्शन प्रेशर 0 है तो टोटल डायनेमिक हेड, लिसन मी केयरफुली, टोटल डायनेमिक हेड, ये हालांकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीजें हैं. टोटल डायनेमिक हेड इक्वल टू जितना प्रेशर, जितना इस पंप ने फ्लूइड उठाया है वो मेरा होगा. ठीक है, यानी कि टोटल फ्लूइड जिसने मेरा इस पंप ने फ्लूइड उठाया वो मेरा होगा, जिसको मैं बोल रहा हूं नेट वर्टिकल लिफ्ट, जिसको बोल रहा हूं व्हाट, नेट वर्टिकल लिफ्ट मींस एनएल. ओके, एनएल. ओके, नेट वर्टिकल लिफ्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. जिससे कुछ प्रेशर मुझे उसने यहां पे भी सरफेस पे दे दिया. ठीक है, उठा भी दिया और सरफेस पे प्रेशर दे दिया. दिस पंप अपलिफ्टिंग दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वर्क अगेंस्ट दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्लस सम प्रेशर ऑल्सो एक्सर्टिंग एट द वेल हेड, मीन्स मुझे टोटल वेल हेड प्रेशर भी दे दिया, THP.
ओके इसको मैं टोटल हेड प्रेशर भी बोल दे रहा हूं। ओके नो प्रॉब्लम। यस यही टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक से याद रख लो कि सर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वेल हेड प्रेशर और कुछ प्रेशर मेरा लॉसेस हो जाएगा फ्रिक्शन में भी मेरे भाई, सो दैट इज ऑल्सो एम्ब्रियो फ्रिक्शन प्रेशर, और इसने यहाँ पे इसको बोला है टोटल फ्रिक्शन लॉसेस। ओके नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक यू गॉट इट कि सपोज, लिसन मी केयरफुली, सपोज अगर मुझे बोल दिया कि सर मुझे पंप ने इतना प्रेशर उठाया है, ट्यूबिंग हेड इतना दिया है, फ्रिक्शन लॉसेस इतना था, तो इसका मतलब भाई ये सारा काम पंप ने किया होगा जब सक्शन जीरो रहा होगा। जब सक्शन जीरो रहा होगा तो ये सारा काम मेरे भाई पंप ने ही किया होगा, तो इसका मतलब टोटल डायनामिक हेड मेरा इन दोनों को सबको मिला के ही रहा होगा। तो बस ये हो गया मेरा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था मुझे, अब मैंने बता दिया है। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को हटा देता हूं, बिकॉज मुझे एक और इससे भी ज्यादा अच्छी चीज आपको बतानी है। ठीक है चलिए, हटाता नहीं हूं, छोटा कर देता हूं। ठीक है चलिए, जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ कुछ बताया है। चलिए नाउ आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ यू विल सी, सपोज दिस इज योर पंप, this is your pump, and this pump uplifting over this particular fluid uplifting, listen me carefully, this pump uplifting this particular fluid, okay, this particular fluid, and this particular fluid hydrostatic pressure, I am telling you hydrostatic pressure is what, suppose this pump, listen me carefully, suppose this pump gives like 300 pressure, okay, 300 psi, okay, and 200 pressure is used to uplift this hydrostatic pressure, uplift this fluid to this particular depth, means 200 pressure, and 100 pressure you will see at the surface. In this particular gauge you will see 100 pressure, okay, no problem. अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसके लेंथ को बढ़ा दूं, ठीक है, सो व्हाट हैपन, दिस टाइम दिस पंप अपलिफ्टिंग दिस फ्लूइड विद a high depth, it means pump is give this time also 300 pressure, so it means what happen, this hydrostatic pressure this मुझे इस बार पंप को जो उठाने में काम करना पड़ता था वो ज्यादा हो गया। ठीक है ओके, इस बार क्या होगा कि पंप को लिक्विड को उठाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो मेरा लॉसेस है या मेरा जो भी मेरा इसको उठाने में काम करना पड़ रहा है वो ज्यादा करना पड़ जाएगा, तो मेरा जो 250 प्रेशर यहीं पे यूज हो जाएगा और यहाँ पे मेरा सरफेस पे ओनली 50 प्रेशर ही महसूस होगा, यहाँ पे 100 प्रेशर महसूस हुआ था। ठीक है, अगर मैं और डेप्थ को बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा काम मेरा इसी में लग जाएगा और यहाँ पे काफी लेस प्रेशर मुझे मिलेगा, जो कि लगभग मान लो 20 ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर मैं इसको और डेप्थ बढ़ा दूंगा मींस वेलहेड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इट मींस मुझे वेलहेड पे कोई भी प्रेशर नहीं मिल रहा है, जीरो प्रेशर मिल रहा है, बट मेरे इस पंप ने सारा का सारा फ्लूइड सरफेस पे उठा दिया है। इसका मतलब ऑल द प्रेशर विच इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पंप दैट इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर हाइड्रोस्टेटिक वर्क, ओके, एंड सरफेस प्रेशर विल बी जीरो, सरफेस प्रेशर विल बी जीरो। सो जस्ट टेल मी कि क्या मैं इस एक्स्ट्रा प्रेशर जो मुझे मिला है इस पॉइंट पे, तो इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से कितनी एक्स्ट्रा हाइट पे ये मुझे फ्लूइड उठा दिया है इसने, क्या मैं निकाल सकता हूं? यही मेरा पॉइंट है, बहुत जगह यूज होता है और ये चीज मुझे पता होना चाहिए कि इसने इसको उठाया था 1000 फीट तक, then you are having wellhead pressure is 100, okay, now it means this the distance is 1000 also, okay, and now this pressure is 0 and this 100 pressure is used to uplifting in this particular extra height, okay, means this is your 1000 same as this, और जो 100 प्रेशर मुझे सरफेस पे मिलता है अब उसको भी मैंने डेप्थ में ही यूज कर लिया, हाइड्रोस्टेटिक में ही यूज कर लिया, जो कि एक्स्ट्रा हाइट मुझे दे रहा है। सो कैन आई कन्वर्ट और कैन आई फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर डेप्थ? यस, आई कैन फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर डेप्थ। ओके, सो नाउ द सेम क्वेश्चन इज दैट, it's a very beautiful question. Now is electrical submersible pump installed at a depth is 1000, okay, from the surface, the ESP ये मुझे पता है कि 20 फीट एक स्टेज कर देता है मेरा काम, means 20 फीट water can be uplifted by a single stage, ठीक है, no problem, okay, and ये भी बता देता हूँ यार सिंगल स्टेज डबल स्टेज क्या होता है। सपोज दिस इज योर ESP, तो देयर इज अ नंबर ऑफ स्टेज पंप, मींस इन दिस पर्टिकुलर वन स्टेज वन डिफ्यूजर एंड वन इम्पेलर, दिस impeller will rotate, okay, and gives to uplifting this particular fluid, okay, फिर यहाँ दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो 3-4 मिलके काफी ऊंचाई तक मेरा फ्लूइड को अपलिफ्ट कर देते हैं। दिस इज योर मल्टी स्टेज, ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ द वेलहेड रिक्वायर्ड इज 100 प्रेशर, ओके, मिनिमम नंबर ऑफ, ओके, so just tell me
मुझे मेरे पंप से क्या करवाना है, सक्शन प्रेशर गिवन है क्या, नो प्रॉब्लम, टोटल डायनेमिक हेड इक्वल टू पी डिस्चार्ज माइनस पी सक्शन, सक्शन जीरो है तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सक्शन इज जीरो, सो आई एम नेग्लेक्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। टोटल डायनेमिक हेड डिस्चार्ज मीन्स, लिसन, डिस्चार्ज मीन्स आई नो वेरी वेल, मीन्स योर हाइट, योर वर्टिकल हाइट प्लस योर वेल हेड प्रेशर, okay, no problem. So sir vertical height I am not getting, sir can I मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं कि मुझे अपने पंप से इस 1000 हाइट तक पंप फ्लूइड उठवाना है, बिकॉज 1000 डेप्थ पे मेरा फ्लूइड है, और दिस एक्स्ट्रा प्रेशर को भी मैं अगर मैं हाइट में बदल दूं तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, जस्ट अभी एक बात ध्यान से समझिएगा कि 100 इक्वल टू 0.052 और लाइक 0.052 आई एम राइटिंग वोट वो 0.433 मल्टीप्लाई ही इज अपलिफ्टिंग water, okay, water specific gravity 1, okay, and the depth I want to calculate, okay. So now you will see what, you will see 100 divided by 0.433, so your answer is what, depth is what, 230, okay, means this extra pressure you are not getting now, but this extra height you are having, okay. So what will be the height corresponding to this particular pressure, so you will convert this height or pressure relation is this, so 250, so it means your pump wants to uplift your fluid this particular 1000 plus 230 also, means total height you can say 1230 feet your pump wants to, okay, इतनी मुझे हाइट उठानी है, ओके, नो प्रॉब्लम। और एक स्टेज 20 फीट उठाता है, लिसन, एक स्टेज दिस हाइट इज अपलिफ्टिंग, नाउ हाउ मच नंबर ऑफ स्टेज आई नीड इन दिस पर्टिकुलर पंप so that you will uplift your fluid this particular height, okay. So means 130 base it will your 20, so you means your total fit or number of one stage in 20 feet, so your answer is 61.5, means 62, we will see, simple, okay, simple question is that, very simple question, this is your answer, okay. So now I think the question, ये बहुत तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आप पहले इस वाली जो हाइट है ना, ये जो हाइट है इसको भी आप पहले प्रेशर में बदल लो, देन इस प्रेशर को ऐड कर दो, ओके, दिस हाइट कैन बी कन्वर्ट, लिसन, दिस हाइट कैन बी कन्वर्ट 0.433 into like this pressure 0.433 multiply 1000, this height can be converted into the pressure form, and this pressure you can add, and then that pressure convert into the height and then divide by the height, same value you will get the same answer. वेरी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि हाइट अगर बढ़ती चल जाएगी तो मेरा ज़्यादा काम पंप ने जहाँ इसको उठाने में करना पड़ेगा और मुझे सरफेस पे जो प्रेशर है वो कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे वो हाइट निकालनी है जब सारा का सारा ये प्रेशर मेरा हाइट में बदल जाए और सरफेस पे मुझे कोई प्रेशर ना मिले, जीरो मिले, तो वो हाइट क्या होगी, मैंने एच निकाल दिया, दैट इज 230, तो टोटल हाइट कितना पंप को करना पड़ा, कंप्लीट उठाना पड़ रहा है, अब ये इतना उठाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, अब इतना उठाना पड़ रहा है तो एक को कितना उठाना पड़ेगा, समझ गया, आई थिंक समझ गया। चलिए, नाउ द क्वेश्चन यू विल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 यू आर हैविंग द सिस्टमैटिक फिगर शोन ए टू फेस हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, ओके। सो नाउ यू विल सी द टू फेस हॉरिजॉन्टल सेपरेटर और फॉर एन ऑयल एंड वाटर सिस्टम, ओके, ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन, पैड हाइट इज h0, दिस इज योर पैड हाइट ऑफ ऑयल, ओके, the oil pad height is h0 and vertical distance between the oil and the water wire is this, okay, this is your water wire and this is your oil wire, and the distance, vertical distance of this means that is representing by delta h, okay, no problem, and everything is steady state or equilibrium, okay, no problem. So I want to, it's very simple चीज है, यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर रखा है, you know very well this particular it's a horizontal 3-phase or 2-phase bucket and wire system, or we have also discussed the derivation kind of thing on this particular formula, on this particular diagram, or on this particular concept, okay, and I'm giving you the formula, my dear, so you will see
I've given the formula. You will see this formula. Okay. Now this is the formula. Okay. Now in this particular formula, the relation between this relation delta H naught, delta H equal to this relation you are having, delta H or H naught relation. So that delta H equal to H naught 1 minus density of oil, density of water. Okay. So density of oil is given 0.8, water density I know very well 1. So you will see this is your relation. Okay, no problem. कुछ भी करना नहीं पड़ा था हम लोगों को, ओनली आंसर यहाँ पे आ गया था. ओके, अब यहाँ पे बात आती है सर व्हाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी व्हाई वी आर एडजस्टिंग दिस पर्टिकुलर डेल्टा एच. एक्चुअली आई एम टेलिंग यू वेरी बेसिक थिंग. इन दिस पर्टिकुलर सेपरेटर द मेन थिंग ऑफ दिस बकेट एंड वायर सेपरेटर इज दैट कि व्हाट विल बी द हाइट you will take of the delta H, means the difference of water wire and oil wire. What will be the difference of the water wire and oil wire? That will be based on the density. अगर density यहाँ पे ज़्यादा होगा, density यहाँ पे ज़्यादा, listen me carefully, density of this particular, यहाँ पे एक हल्का सा point बता दे रहा हूँ, उसी से चीज़ें clear हो जाएंगी. If the density of this particular oil is higher, okay, higher, so what happen? This gives a higher hydrostatic pressure to this particular water, and this water try to move this side. ओके, नो प्रॉब्लम. सो क्या होगा अगर मेरा ये ऑयल मेरा हाई डेंसिटी देगा, अगर मेरी डेंसिटी इसकी सपोज 0.9 है, सो ये ज़्यादा इसको कंप्रेस करेगा वाटर को, और ये वाटर मेरा इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे मुझे ये देखने को दिस वाटर ट्राई टू मूव दिस डायरेक्शन. सो व्हाट आई विल डू लिसन, तो क्या होगा कि वाटर का रेट जो मेरा इस तरफ मिल रहा है मुझे सेपरेटर में, दैट विल बी इंक्रीज और ओवर लिमिट हो जाएगा. ठीक है, और उससे क्या होगा, ऑयल मेरा इस तरफ गिरना पसंद नहीं करेगा. तो ऑयल का सेपरेशन और वाटर का सेपरेशन कैन बी डिस्टर्ब. सो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द ऑयल एंड वाटर आई विल फिक्स दीज वायर डिस्टेंस. Okay, so what I will do, suppose density of this particular is higher, means 0.95. Okay, so hydrostatic pressure is more. Listen, hydrostatic pressure is more. So now I will shift this water, try to shift this side. So what I will do, I will decrease this height, I will decrease this distance, means I will uplift this wire. These are the adjustable wire. So I will increase this height, I will uplifting to this particular point, so that the over water will not fall down this direction. Everything should be smooth or with a proper arrangement. Okay, so now you will see, you can also put the value. Listen, you can also put the value. Suppose I am putting there 0.95 and this is your 1. Okay, so what you will get, delta H equal to H naught and H naught 0.5. okay, नहीं, this will be your delta H equal to 0.05 and this, suppose you can take the 0.9, okay, this will be easy calculation or easy understandable. Okay, this will be H or this will be I think 0.1. okay, 0.1. So just tell me this 0.1 H is higher or 0.2 H naught is higher. Okay, so definitely this will be higher, so it means this distance is higher, it means this wire should be downwards. Okay, no problem. Now see this particular example, this particular example. If this is a 0.1 H, this is lesser as compared to this. Okay, so this should be not this distance, this should be less, means this. So now I want to uplift this particular wire or adjust this particular wire. Okay, so your length will be increase of this particular wire, delta H will decrease. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा ले ली भाई तुमने. क्यों? यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, ये ज़्यादा इधर गिर जा रहा होगा, तो क्या ना डिस्टर्ब हो जा रहा होगा. ये जब ज़्यादा इधर गिर जाएगा तो ये ऑयल इस तरफ नहीं आएगा, तो एक अरेंजमेंट खराब हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेंसिटी डिफरेंस आई विल टेक ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर वायर और तेरा ऑयल वायर. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, तो आई थिंक यू गोट इट ए बेसिक आइडिया कि हाउ वी आर वर्किंग इट ऑन इट. ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. और vertical lift performance VLP curve and a IPR curve I know very well, curve and used to find out the production operating condition. Okay, if PWF is the flowing bottom hole pressure, okay, and the Q is the oil flow rate, and select the correct statement. Okay, I want to select the correct statement. Okay, so no problem. So before explaining this particular question, I want to show you this particular picture. Okay, two picture. Okay, the first picture is that whatever the fluid coming from the reservoir to wellbore, this is representing by the
the IPR. This is representing by the IPR. Okay, no problem. And whatever the fluid, this is a green color and this is a green line. Okay, no problem. And also telling you IPR means fluid is incoming into the wellbore. Inflow performance. Inflow means fluid will be inflow into the wellbore. Okay, now whatever the fluid is outflow means your vertical lift. Okay, so this is representing by another curve, another graph. Okay, that is called a VLP curve, and this is a red line or this is also red line, and where these points will meet that fluid you are getting at the surface. ओके, नो प्रॉब्लम. बिकॉज अगर ज्यादा फ्लूइड वेलबोर में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरफेस पे ज्यादा फ्लूइड मिल जाएगा. हो सकता है सरफेस पे ज्यादा फ्लूइड ना मिले, और हो सकता है सरफेस पे ज्यादा फ्लूइड मिलने की पावर है बट अंदर ही बहुत कम फ्लूइड आए, तो हो सकता है मुझे सरफेस पे ज्यादा फ्लूइड ना मिले. तभी भी मुझे चाहिए कि मेरा इनफ्लो भी अच्छा हो, मुझे चाहिए आउटफ्लो भी अच्छा हो, तब जाके मुझे सरफेस पे ज्यादा फ्लूइड मिलेगा. ओके, सो आई थिंक यू गोट इट. ओके, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो कि whatever the performance of inflow and whatever the performance outflow, both flow or both performance indicate you or like represent you what will be the amount of flow rate you are receiving at the surface. Okay, that will not depend on the single curve, either IPR either VLP. No, that will depend on both point. Okay, both curve, no problem. So you know very well this is the PWF. Okay, maximum flow rate or maximum pressure will be P reservoir this, or maximum flow rate you will have this. Okay, this is your maximum graph. Okay, now you will see when the PWF. Okay, you know very well when the PWF is 0, or you can say 0 psi-G or 14.7 psi-A, so that then you will have the maximum flow rate, which is called a Qmax, which is called a open flow potential. Okay, this is your 0, or you can say open flow potential. Okay, so now we will see this particular options. Point 3 is absolute open flow potential. So this is your open flow potential. This is your open flow potential, means at this particular point maximum flow rate you are having, at this particular point maximum pressure you are having, and maximum pressure can be your P reservoir, no problem. So now point 3 is absolute open flow potential. Point 3, no, this is your maximum reservoir, this is your open flow potential. Okay, so this is not the correct answer. Point 2 is at reservoir curve 2 is a VLP curve. Okay, point 2, point like what? Point 2 is what? Where? Yeah, this is a point 2. Point 2 where's the point? Yeah, point 2. This is a point 2. Point 2 at reservoir pressure, and curve 2 is VLP. Curve 2 is VLP. Yeah, this is right, but point 2 is not the reservoir pressure. Reservoir pressure is this. Okay, यानी कि ये भी गलत है. It means this is also wrong. Okay, point 1 is operating condition. Point 1 is operating condition. Curve 2 is IPR. Curve 1 is IPR. This is also wrong. Okay, no, next point. Point 2 is absolute open flow potential. Point 2, yes, absolute open flow potential. Okay, curve 1 is IPR. Yes, curve 1 IPR. Okay, so this is the right option. सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर. दिस इज मैच द फॉलोइंग माय डियर. ओके, एंड नंबर ऑफ वॉल्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर सीरीज आल्सो, लाइक मास्टर वॉल्स, लाइक यू विल सी ब्रीथिंग वॉल्स, टेस्टर वॉल्स, डंप वॉल. ओके, सो वी विल सी. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, मास्टर वॉल इज व्हाट? मास्टर वॉल, यू नो वेरी वेल, इन क्रिसमस ट्री वी विल यूज द मास्टर वॉल. ओके, सो मास्टर वॉल वी विल यूज इन क्रिसमस ट्री. इट मीन्स P goes to second, P goes to third. So I think this is the right answer, this is the right answer. Okay, no problem. Breathing wall definitely we will use in storage tank. Storage tank में क्या होता है, दिन में और रात में टेम्परेचर बढ़ता घटता जाता है. इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड वट एवर यू हैव स्टोर इन दिस पर्टिकुलर स्टोरेज टैंक. ओके, सो बिकॉज ऑफ प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीजिंग योर मोलिक्यूल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरेज फ्लूइड दैट ऑल्सो इनहेंस. ओके, दैट ऑल्सो गोज टू द फार अवे. सो व्हाट हैपन कि यहाँ पे एक मेरा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वेपर ज्यादा बनेगी, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. सो दैट प्रेशर I want to release into the atmosphere, otherwise this storage tank may be damaged. Okay, and because of less temperature, because of क्या हुआ कि योर फ्लूइड योर कुछ वेपर्स रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में. ओके, इससे हालांकि लॉस भी होता है, इसी को हम ब्रीथिंग लॉस भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम. सो यू विल सी दिस इज ऑल्सो लॉसेस ऑफ वेपर्स, और वेपर के साथ ऑल्सो यू विल सी कि कंडेंसेट ऑल्सो रिमूविंग इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्रीथिंग लॉसेस. ओके, सो इन लेस टेम्परेचर मीन्स इन नाइट, सो व्हाट हैपन, योर मोलिक्यूल्स ट्राई टू कंडेंस and your volume will shrink. So what happen, there will be create some vacuums here. Okay, and because of vacuums these storage tanks can be collapsed.
बट व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ ए प्रेशर लिमिट वैल्यू, यू विल सी कि सर प्रेशर बहुत घट गया है, तो दीज वॉल्व विल ऑटोमेटिकली ओपन एंड एटमोस्फेयर से कुछ एयर जाके अंदर चले जाएगी और उस वैक्यूम प्रेशर को इक्वलाइज कर देगी, सो दैट यू विल सी एयर इज एंटरिंग इन दिस पर्टिकुलर टैंक. एयर इज मीन्स ओनली एयर. ओके, सो एयर अगर यहाँ पे जा रही है और वेपर निकल रही है, रात में एयर जा रही है, वेपर निकल रही है, तो इससे मेरा वेपर का लॉस हो रहा है, मेरा कंडेंसेट का लॉस हो रहा है. इट मीन्स दिस ऑल्सो कैन बी ए ब्रीथिंग लॉसेस. सो आई विल यूज ए ब्रीथिंग वॉल इन स्टोरेज टैंक्स. सो यू विल सी Q goes to storage tank 4, 5. So it means Q goes to 5. I think either this right or this is right. Okay, no problem. Now tester wall definitely I will use in drill stem testing. Drill stem test. This is drill stem test. Well testing में you will see the tester wall. In tester wall we will open or close so that your fluid from the well bore will enter in this particular tool. So I think tester wall goes to first. Tester wall goes to first. So it means B will be your right answer. Okay. Dump wall generally we will use in your like displacement motor. Suppose your pump is pumping fluid. Okay. And suppose any kind of your blockage in this particular I'm telling you blockage in this particular pipeline or in your flow tube. So what happen, क्या होगा कि भाई ये तो प्रेशर जनरली कंटिन्यू दे ही रहा है ना, यहाँ पे रिलीज हो नहीं रहा है, तो एक वॉल लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, जिसको हम लोग ब्लो ऑफ वॉल भी बोलते हैं. ठीक है, ब्लो ऑफ वॉल भी बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपन, योर प्रेशर विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके, सो जब भी हम लोग ब्लॉकेज ठीक होगा तो योर फ्लूइड ऑल्सो विल मूविंग दिस डायरेक्शन. सो ये क्या होगा, ये प्रेशर एक इसी को दबा के रखा हुआ है, ये बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, तो प्रेशर इधर नहीं जाएगा, तभी जाएगा जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ये पाइपलाइन वगैरह ना फट जाए तुम्हारी, तो प्रेशर विल बी रिलीज दिस साइड. ओके, सो नाउ यू विल सी द डंप वॉल, यू कैन से द S goes to my dear you, yeah, fourth S goes, yeah, I think B is right answer. B is right answer. I think it's okay, no problem. चलिए, so now we will see the next question, my dear. It's a very simple question. A very productivity. He is telling us about productivity test was conducted on a single phase. Okay, single phase बोला है. Okay, no problem. He is telling us single phase. Okay, the well is capable to produce 100 STB day. Okay, so it means Q given. Okay, Q given 100. Listen me carefully. STB per day. Okay, and the flowing bottom hole pressure यानी कि PWF also given, that is your 1000 PSI G. Okay, note A. Okay, in 24 hours certain static pressure is found, that is your 1500 PSI maximum flow rate I want to calculate. Okay, so the I'm telling you very important things. Suppose this is your well. Okay, your well bore, your fluid, your PWF is given, that is your 1000 PSI. Okay, no problem. And definitely your fluid is flowing ना, that is your how much per rate STB per day. Okay, जब मेरा फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है और PWF मेरा 1000 है, तो इसका मतलब रिजर्वोयर का प्रेशर कुछ ज़्यादा होगा, तभी तो ये इसके अंदर आया होगा, ये प्रोड्यूस हो गया होगा. नो प्रॉब्लम. तो इसका मतलब मुझे ये तो पता चल रहा है कि रिजर्वोयर का प्रेशर यहाँ पे कुछ ज़्यादा है होगा, लेकिन दिया नहीं है, लेकिन दिया है तो कुछ और बोल के दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं. सो द 24 आवर सर्टेन स्टैटिक प्रेशर इज फाउंड. ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई एम डूइंग सर्च दिस पर्टिकुलर वेल बोर फॉर 24 आवर. ओके, नो प्रॉब्लम. सो देन दिस रिजर्वर फ्लूइड विल बी दिस accumulating like this. Okay, ये यहाँ ऐसा भरने लगेगा, पूरा इकट्ठा होने लगेगा, सारी जगह फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, तो तब जो बॉटम होल प्रेशर है ना, देन द बॉटम होल प्रेशर इज दैट इज 1500. इसका मतलब ये है कि रिजर्वोयर का प्रेशर पूरी जगह पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा. 24 घंटे वेल बंद करने के बाद ये पूरा जोर लगा रहा होगा प्रोड्यूस होने में, तो यहाँ पे सब जगह मेरा प्रोड्यूस जो है वेल जो प्रेशर है वो यहाँ पे इस जोन में अगर मैं देखूँ तो वो पूरा बराबर हो गया होगा रिजर्वोयर के प्रेशर के बराबर, जो कि 1500 है. ठीक है, तो इट मीन्स दैट he is given 1500 flowing bottom hole pressure when you are shut the well for 24 hours. So it means this is your what, P reservoir. Okay, because PWF बंद करने के बाद रिजर्वोयर प्रेशर पे ही आ गया होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ. बिकॉज इफ यू आर shut the well for 24 hours, so PWF achieve the pressure of reservoir pressure. So that I want to tell you. Okay, no problem. चलिए,
So now what I will do, okay, he is telling a single phase flow. I am telling you this concept we have discussed in our lecture series na in detail, because number of possible cases, all the cases we have discussed, because number of cases you will have. I am telling you the cases. Just tell me, we will solve this question, no problem. Just tell me कि what can be the cases you will see. You will see the cases is that कि हो सकता है IPR वाले क्वेश्चन में हो सकता है you will see the case number 1 when reservoir pressure, sorry, like yes, your reservoir pressure is greater than bubble point pressure. This is your single phase flow. I think this is the case, no problem. And maybe the reservoir pressure is less than bubble point pressure. Then another kind of equation I will use. Okay, no problem. Then is there any cases sir or not? Yes, more cases you will see. कि अगर मैं इसी को categorize करूँगा, if I am categorizing this particular thing, means अगर मैं इसके बात करूँगा, तो just tell me one thing. If reservoir pressure is less than bubble point pressure, तो definitely flowing valve bore pressure also will be less than. तो इसमें कोई केस नहीं बनता है. तो you will not see any kind of cases in this particular situation, because जब reservoir pressure ही bubble point से नीचे है तो definitely ये तो कम होगा ही होगा, ये भी इससे कम होता है तो definitely ये इससे नीचे होगा ही होगा. तो इसमें और कोई केस नहीं बनता है. So you will not see any kind of case in this situation, but in this situation may be the cases may be. Okay, हो सकता है whatever. Just tell me IPR kind of question. If you will see the IPR kind of question, definitely one data you will have. Listen, one data you will have. One data means sir, means one flow rate or PWF combination you will have. Otherwise you cannot calculate J, and if you are not calculate productivity index or J, then you will not calculate the flow rate at any further pressure or PWF. Okay, अगर आपको फ्लो रेट और PWF का एक कॉम्बिनेशन नहीं दिया है तो आप J नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, और J नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो आप किसी और फर्दर प्रेशर पे क्या फ्लो रेट होगा वो भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे. तो इसका मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अब यहाँ पे. तो इसका मतलब ये है कि आई डेफिनेटली नीड एक पैकेज ऑफ फ्लो रेट और PWF. एक मुझे ये देगा ही देगा. अब यहाँ पे लिसन, अब यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन बनता है, लिसन, PWF और दिस, ओके, PWF और दिस. लिसन, अगर मुझे ये कंडीशन गिवन है तो डेफिनेटली जो फ्लो रेट एंड PWF का डेटा है वो मुझे इससे फ्लो रेट और योर PWF का जो डेटा है वो हमेशा P बबल पॉइंट से नीचे वाला ही मिलने वाला है, बिकॉज रिजर्वोयर का प्रेशर इससे नीचे है. बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, जो मुझे डेटा मिलेगा ये वाला क्वेश्चन में वो हमेशा मुझे इससे नीचे, जब PWF ही रिजर्वोयर बबल पॉइंट से नीचे है तो PWF वाला डेटा भी मुझे, फ्लो रेट वाला डेटा भी मुझे बबल पॉइंट प्रेशर से नीचे वाला ही मिलने वाला है. तो यहाँ पे कोई भी और केस नहीं बनता है. बट माय डियर, देयर विल बी टू काइंड ऑफ केसेस कि सपोज ये इससे ज्यादा है, बट वॉट एवर द डेटा मीन्स फ्लो रेट एंड PWF डेटा यू आर हैविंग मीन्स PWF means less than your bubble point pressure, or maybe your PWF greater than your bubble point pressure. Okay, so this combination means this PWF, whatever the PWF is given, okay, and flow rate is given, okay, PWF is given and corresponding flow rate you are having, that PWF is less than bubble point pressure. Okay, another case is that कि whatever the PWF data you are having, PWF and flow rate, that is less than PWF, or there is a greater than. Okay, यहाँ तक बात होगी. ठीक है. Now this is the chart is you can say is applicable, or like this is the calculation whatever I am telling you. This is applicable when your bubble point pressure is achieved, or you are having data in your question. Means graph is that your graph some straight line, then you will curve. Okay, maybe complete curve. Okay, maybe this kind of value. Okay, but if your graph is like simple straight, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में मैं फिर इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला. इस केस में सिंपल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और निकाल लूंगा. तो कहने का मतलब है ये तभी पॉसिबल है, these are the things then possible is possible when only when you are having bubble point pressure value in this particular chart or in the any questions that is given. Okay, no problem. चलिए, और यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ, यहाँ पे बोगल इक्वेशन लग जाता है. ठीक है, यहाँ पे अलग
कुछ इक्वेशन लग जाता है, अलग फॉर्मूले लग जाते हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर रखे, बट अभी के लिए दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट हेयर, एंड आई एम टेलिंग यू दैट विल बी नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज जनरली द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन ओनली द स्ट्रेट लाइन सिंपल क्वेश्चन, okay, to calculate the productivity index J simply, and you will get the flow rate at different PWF, okay, and maybe if the examiner wants to make the difficult question, so he will approach to this your Vogel equation, okay, like Q upon Q max, no problem, and these two cases is so little bit difficult, okay, not so much difficult, but exam में आना थोड़ा difficult होता है, ठीक है, चलिए no problem. So now यहाँ पे कोई bubble point की बात की है क्या? There is any value is bubble point given or not? No. So it means this chart कोई यूज नहीं है, इस चार्ट का कोई यूज नहीं होने वाला है, ठीक है. सो वट एवर आई टोल्ड यू that we will not use here, okay. So simple question is that दिस इज सिंगल फेस, ओके, सिंगल फेस मीन्स देयर विल बी नो कर्व लाइन, सिंगल फेस तो कोई कर्व होगा नहीं. हालांकि चीजें क्या ना सिस्टमेटिक होता तो हम और अच्छे से मजे से पढ़ाते, अभी क्या ना क्वेश्चन है तो बस उसको बीच से उठा के चीजें बतानी होती है, ठीक है. अब इसलिए कई बार मैच नहीं होती कहानी, समझ रहे हो. चलिए, सो नाउ द थिंग इज सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि आई वांट टू कैलकुलेट जे, सो ही इज टेलिंग अस व्हाट 100 STB, okay, and PWF is this, PWF 1000, okay, and this is 100 STB, okay, and I want to calculate P reservoir is 1500, okay, no problem, and he want maximum flow rate means I want to calculate this or this calculation will be based on when pressure will be 0, okay, pressure will 0 psi G and 14.7 psi A. So every data is given in psi G or psi A, psi G, so it means I will consider 0 psi G, not 14.7, okay, no problem. So can I calculate the trend of this particular value? Okay, yes, no problem. So J equal to Q upon P reservoir productivity index, I know this particular formula. J equal to Q is 100, I think, or this is your 1500 minus 1000, so you will get 100 upon 500, it will be your 0.2, I think, okay. चलिए, so J you are having 0.2, no problem, means unit will be what, STB per day per PSI, okay, no problem, means STB per day upon PSI, okay, no problem. Now I want to calculate the flow rate at, अब नाउ क्या होगा कि अब जहां भी मेरा J निकल गया तो इन ईच एवरी पॉइंट ऑफ दिस IPR कर्व इज J विल बी कांस्टेंट. तो इसी का फायदा उठा के मैं किसी भी पॉइंट पे फ्लो रेट निकाल सकता हूं, ओके. So I will take benefit to calculate the flow rate of any point, okay, using the J value, okay, no problem. So J equal to Q upon P reservoir minus PWF. Again I am taking this particular formula. J value I know 0.2. Flow rate is what? Flow rate I want to calculate. Q maximum. I am writing maximum. Maximum means PWF will be 0 psi-G, okay. So P reservoir is 1500 minus 0 psi-G, so you can say 1500 multiply by 2, so you will see Q maximum equal to 300 STB, unit will be same STB per day, okay. So maximum flow rate will be, you will see, this is your 1000, maybe your 2000, sorry 100, 200, or this will be your 300, okay. So now your right answer will be this 2992310. Okay, so 300 your right answer. A simple question, but the main motive of this particular question is that कि मुझे वो चार्ट आपको दिखाना था. I want to show you the chart कि what can be the possible cases or and from the numerical can be asked, okay, and different cases, and all the different cases has the different formula to calculate your flow rate at different pressure, okay, no problem. वो हमने लेक्चर में अलग डिस्कस कर रखा है, बट ये क्वेश्चन हालांकि इतने टिपिकल नहीं आते हैं, ठीक है. आप लोग देखोगे क्वेश्चन जब भी जनरली देखने को मिला है IPR पे मुझे, तो वो या तो सिंगल स्टेट बेस पे लाइन पे मिला है जिसमें PWF की बात भी नहीं की है, और या फिर मतलब नॉर्मली वोगल पे मिला है, ठीक है. चलिए, now the next question you will see, an oil well of the wellbore radius is 0.5 feet, okay, I'm making the picture of this particular question, okay. So now you will see wellbore radius is what 0.5 feet, okay, 0.5 feet, no problem, and it's shown to develop
a skin due to the formation damage. Okay, skin I want to calculate. Okay, skin I want to calculate, no problem. Damage zone radius is what? Damage zone radius is given, means damage zone radius I am measuring from middle of the valve, middle point of the valve. Okay, that is given what? That is given 2.25 in feet. No problem, sir. Around the valve, the formation permeability means the formation, this is your damage zone. Okay, this is your damage zone. Okay, now damage zone, this is the damage zone. Formation permeability K is given 300 millidarcy, and damage zone permeability, definitely damage means reduction of the permeability. Damage zone permeability is 100 millidarcy. No problem, sir. Okay, and the effective valve radius I want to calculate, sir. Effective valve radius, no, skin factor I will not calculate the skin factor. Okay, he is telling us develop due to skin. Okay, I want to calculate the effective valve radius. Effective valve radius equal to the valve radius e to the power minus s. This I want to calculate. Okay, so I know this particular value, valve radius. Yes, I know very well. E to the power minus s. So can I calculate s from these data, so that I will put the s value and you will get the actual, like apparent value, sorry, effective valve radius. Yes, I can do that, no problem. So the thing is that, my dear, I know very well the formula. S equal to like K upon K minus 1. Okay, means this will be formula, means K K upon Ks minus 1 ln R S upon RW. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपेस. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया. मैनी टाइम यू विल सी द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सर, सो इन द क्वेश्चन ही इज गिवन द डैमेज जोन रेडियस. तो अगर इस क्वेश्चन में कोई ट्रैप बनता है तो वो यही बनता है. ही इज टेलिंग अ डैमेज जोन रेडियस. डैमेज जोन रेडियस मतलब कि आई एम मेजरिंग दिस पर्टिकुलर लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेल्व टू दिस पर्टिकुलर डैमेज जोन लेंथ. ओके, अगर वो मुझे बोल देता कि डैमेज जोन लेंथ, इफ ही इज सेइंग द डैमेज जोन लेंथ नॉट रेडियस, सो आई विल राइट दिस इज योर 2.25. दिस 2.25 feet is this point to this damage zone length from the wellbore, but he is saying damage zone radius. Okay, and I want here damage zone radius, not the damage zone length. Listen, if the in question he is given damage zone length, means damage zone length is given 2.25. Suppose if this is given, means this is given, and I want damage zone radius, so I will add this particular wellbore radius. तो मुझे अगर damage zone length से damage zone radius बनाना होगा तो मैं ये ऐड कर दूंगा, तभी मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा. नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जो भी डैमेज जोन लेंथ दिया है वही यहाँ रख देते हैं और आपका आंसर गलत आ जाता है. 2020 में हुआ था. ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर ऊपर नीचे हो गया था. हालांकि वो गेट में रेंज ऐसी आ गई थी कि वो जिसने ये डैमेज जोन लेंथ ले लिया वो भी सही हो गया, इसका रेडियस लिया वो भी सही हो गया. वो एक इत्तेफाक वाली बात है. नहीं तो फैकल्टी चाहे तो, एग्जामिनर चाहे तो इसी को ट्रैप बना के रेंज से बाहर आपका आंसर करा देगा. बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये मुझे ध्यान रखना है कि डैमेज जोन लेंथ दी है या रेडियस दिया है, आई हैव टू कंसीडर, आई हैव टू फोकस कि इज देयर गिवन डैमेज जोन लेंथ और डैमेज जोन रेडियस. इफ डैमेज जोन लेंथ इज गिवन तो आई हैव टू कन्वर्ट डैमेज जोन लेंथ इनटू डैमेज जोन रेडियस. आई हैव टू ऐड वेल्बोर रेडियस. ओके, इफ इज गिवन डैमेज जोन रेडियस तो आई विल नॉट ऐड एनीथिंग, आई विल पुट डायरेक्टly here. I think you got it. Okay, now I will put the formula. K means normal reservoir permeability, that is given 300 upon 100 minus 1. Okay, ln RWS means, please mention कि both unit will be same, either in inches, either in feet, no problem. This will be your 0.5. Okay, now I am doing the calculation, my dear. Okay, 2.25 divided by 0.5. And now ln value is this, and multiply by what? This will be multiplied like 100. This will be your 2 like 2. Okay, multiply by 2. So your skin value will be 3, and your answer is positive. Your answer is positive. No problem, sir. Positive means damage zone. ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. So अगर बस मुझे एक बात बताइए, now you will see your valve radius skin factor is like positive 3. So now I want to calculate this. So RW is given is 0.5 multiply e to the power minus
3, as means plus 3 minus 3, no problem. So I will do the calculation. Okay, e to the power minus 3 multiply by 0.5. So your answer will be effective valve radius is 0.02489. Unit will be, this unit is what, fit, this is also fit. Okay, this is your right answer my dear. Okay, so now अब आप बोलोगे सर ये इफेक्टिव का मतलब क्या है, what does it mean of the effective? First you will check the answer. आपका आंसर मैच कर रहा है क्या? Yes, आपका आंसर मैच कर रहा है. Okay, so the thing is that my dear कि what does it mean of the effective valve radius? Okay, just tell me, अगर ये डैमेज, listen me carefully. सर अगर मेरी बात समझना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक अच्छी सी बात है जो आई वॉन्ट टू मेक यू फील कि ऐसा चीज़ें हो सकता है क्या. मान लो दिस इज योर वेलबोर और दिस वेलबोर रेडियस इज योर 5, दिस वेलबोर रेडियस इज 5 फीट. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, हालांकि 5 फीट का कोई वेलबोर नहीं होता. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 5. ओके, नो प्रॉब्लम. सपोज इसकी इफेक्टिव वेलबोर रेडियस क्या होगा, बिकॉज देयर इज ए नो डैमेज. भाई जितना भी वेलबोर का रेडियस है, वट एवर द वेलबोर रेडियस यू आर हैविंग, दैट इज द सेम इफेक्टिव, बिकॉज नो डैमेज, no stimulated, means there is a no damageness, no stimulated, means skin value is 0. It means your effective valve radius equal to valve radius e to the power 0, so that will be equal to e to the power 0 means 1. So I think these both are equal. Both are equal. Now if your valve radius, if your zone is damaged, if your zone is damaged means skin value is your positive, skin value positive, it means इसका जो तुम्हारा आपका वेलबोर है ये बहुत खुला खुला फील नहीं कर रहा है, मतलब इसके पास ऑयल इस हिसाब से नहीं आ रहा है, उस फ्लो रेट से नहीं आ रहा है जिस वेट से नॉर्मली आ जाना चाहिए था, समझ रहे हो, आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे उस फ्लूइड से आ नहीं रहा है. तो क्या होगा, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा वेल बोर इस डैमेजनेस के साथ, इस पॉजिटिव स्किन के साथ, एक छोटे वेलबोर के साथ, एक छोटे वेलबोर विदाउट डैमेजनेस के जैसा महसूस कर रहा होगा. बात समझना, ये वेलबोर, ये बड़ा वेलबोर इस डैमेज पॉजिटिव स्किन के साथ एक छोटे वेलबोर जीरो स्किन के जैसा महसूस कर रहा होगा. बात समझ रहे हो. तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव स्किन है तो इफेक्टिव वेलबोर रेडियस विल बी लेस देन नॉर्मल वेलबोर रेडियस, जैसा यहां हुआ है कि इफेक्टिव वेलबोर रेडियस, आपकी नॉर्मल वेलबोर रेडियस ये है और इफेक्टिव वेलबोर रेडियस बहुत छोटी आई है. क्यों? इस पॉजिटिव स्किन की वजह से. बात समझ रहे हैं. अगर मैं इसको और थोड़ा सा चेंज करना चाहूं, इफ आई वांट टू टेल यू मोर थिंग अबाउट इट, सो स्किन वैल्यू इज नेगेटिव. ओके, एंड दिस वेलबोर ये काफी ओपनली फील कर रहा है इस बार. क्यों? बिकॉज नेगेटिव स्किन है, मतलब फ्रैक्चर्स हैं. तो कहीं ना कहीं देखूंगी ये फ्रैक्चर्स को अगर मैं इनको तोड़ के ऐसे लगा दूं तो मुझे वेलबोर की रेडियस बढ़ी हुई महसूस हो रही है. तो अगर मैं इसको इस तरीके से बोलना चाहूं कि दिस वेलबोर रेडियस इज जस्ट फील लाइक ए ग्रेटर वेलबोर रेडियस व्हेन your skin is 0. But this valve radius, this 5 feet valve radius with a negative skin, it just feel 7 feet valve radius when skin is 0. ऐसा फील कर रहा होगा. ठीक है, तो इसका मतलब आप देखोगे कि इफेक्टिव वेलबोर रेडियस इन दिस सिचुएशन इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेलबोर रेडियस. व्हाई? व्हेन यू आर पुटिंग द एस वैल्यू इज नेगेटिव, सो नेगेटिव और नेगेटिव विल बी पॉजिटिव एंड ई टू द पावर पॉजिटिव ग्रेटर देन वन वैल्यू एंड ग्रेटर देन वन वैल्यू मल्टीप्लाई यू विल सी द ग्रेटर देन दिस वैल्यू. ओके, आई थिंक यू गॉट इट. सो एक ऐसा फील मैं आपको कराना चाह रहा था कि एक्चुअली इफेक्टिव और ये नॉर्मल होता क्या है भाई. ठीक है, बात समझ रहे हैं. इफेक्टिव का मतलब होता है कि यू आर मेजरिंग द वेलबोर रेडियस व्हेन द स्किन वैल्यू इज 0. सो ये बात समझ रहे हैं आप लोग कि ये जैसा होता है ना कि स्किन वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये वेल बहुत अंधकार में है, कोई फ्लूइड अंदर आने की बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये उतना ही मुझे प्रोडक्शन दे रहा होगा जितना एक छोटा वेलबोर देता जब स्किन 0 होती. बात समझ रहे हैं. ऐसा ही कुछ है कि ये मुझे नेगेटिव स्किन के साथ इस तरह खुला खुला महसूस कर रहा है कि जैसे मेरा एक बड़ा वेलबोर जीरो स्किन के साथ महसूस करता है, बिना स्किन के साथ महसूस करता है. बात समझ रहे हैं. तो यही चीज मेरी एक चीज थी जो आई वांट टू मेक यू फील. ओके, आई थिंक क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, बट इस तरीके की चीजें आपको फील करना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड वी विल सी द नेक्स्ट क्लास द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन GATE 2017 फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. ओके, सो हम लोग वहां पे कुछ अच्छी चीजें देखने वाले हैं. So this is all about today, my dear. Thank you very much. Have a nice day.